So we are going to have in today's class like yesterday. So we had Dirac's equation. Conceptually, how Dirac arrived at it. So Dirac, to summarize it, what did Dirac do? Dirac found that the idea of negative probability is unphysical. To circumvent the unphysicality of negative probabilities, he went to change the nature of differential equations. Nature of differential equations, which was second order. उसने first order change किया. But कैसे change किया? In that equation, he invoked the algebra of Clifford उनकी property को remove करके such that it will satisfy those original equation of properties, and in that sense the equations which he arrived at, they helped us in the equations he arrived at, they helped us in while iterating. So last में equation आई थी, so we got some additional two terms. So उससे हमको जो spin of the electron है, the magnitude, the extra spectral lines which came out to be, they could be exactly explained by those ways. So Dirac was instrumental in giving us how he tried to explain spin as a fundamental property, which was not previously there. It was in a rough sense, it was in a qualitative sense. Dirac ने एक mathematical or quantitative machinery दी how we can arrive at this property of spins. अब spin in general sense means हर किसी particle का अपना spin हो सकता है, ठीक है? Which you later study in your classification as Bose particles का अपना spin होता है, Fermi-Dirac है ना spin. So what is the classification of spin in that sense? So before we are going to see, so you can say, for example, the primary aim of Dirac was what? Primary aim was relativistic formalism of positive probabilities. Yeah? Or it was a sort of relativistic formalism, I'll emphasize here. Such that जो हमारे पास equation आई थी, from which we have like this. So this is the Hermitian matrices of different kind, alpha 1, alpha 0, alpha 2, alpha 3. So from so we know जो equation of continuity हमारे पास है, it's basically rho is equal to, and this is, if you remember Kalwal, from this equation of continuity, it's rho, it's psi square. Psi का ही जब right hand side में आएगा, it will come as plus minus. It will come as plus minus. So इसका अपना है how we find psi and how we have current density in the Schrodinger equation. Schrodinger equation की जो equivalence है for what is the term which you can map to current density, and what's the term which you can map to J rho. Okay, in that sense. So this psi square, this can be interpreted as d3x, है ना ऐसे. So how we could represent? So अगर हम कोई wave function psi है, it's proportional to like this, iota by x, p dot x minus p of t. And you can see the equivalence of p and e in terms of जो हमारे पास time variables के साथ ही है, कुछ variables के साथ. Because we are taking this original idea जो मैंने start में कहा था, the field theoretical point of view or particle point of view. In that sense. So we are basically interested in how Dirac formulated a field theory.
So you take the particle point of view. ठीक है? So अगर ये function psi है, इसका evolution हम इसको ऐसे देंगे in terms of this thing, and energy हमारे पास होगी, energy is normally like this, which you have studied in your earlier classes. So it might, this energy of electron might correspond to two spin states. Two spin states with Jz is equal to plus minus h by 2. और the other solution इसका ये भी आएगा, हम तो ये plus only, we are only taking plus solution. You can also take it as we have rejected. So क्योंकि अगर ये e square आएगा ना यहाँ पर, ये आएगा p square, अगर ये माइनस में आएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, आयोटा आएगा, ठीक है? So we are not taking this solution because of the जो argumentation Dirac ने दी थी, because he was not interested in the negative solutions, or because they will give us the negative probabilities. And उसको सरल करने के लिए उसने change the second order differential equation original जो Schrödinger equation थी, relativistic Schrödinger equation to first order differential equation. So this was his logic. And in that process he got a quantitative analysis of spin as a factor, which will explain the just extra spectral lines जो हमारे पास आ रही है, ठीक है? तो अगर आप ये लेंगे, this is the argumentation लेंगे, such that normally जो E होता है हमारे पास, this is p square c square plus m square c4. अगर classical physics में लीजिए, in classical physics, not in quantum physics or this relativistic quantum physics, so if you can take it like this, classical special theory of relativity. Special theory of relativity can also be taken in the classical sense. जैसे classical Maxwell's equation है ना, that's a classical field theory, है ना? But quantum mechanics में special theory was not invoked, so that's the thing. So the invocation of quantum mechanics and special theory relativity, उसी को हम कहते हैं relativistic quantum mechanics. And relativistic quantum mechanics as a subset of quantum field theory. This is what we are trying to see. So classical sense में you can take it like that. So and from this you can have these two solutions. So classically अब इसमें क्या है? इसमें एक मसला आ रहा है, for example E is equal to है ना mc square है ना, इधर जो एनर्जी होगी ना, इधर it can be greater than mc square अगर नेगेटिव सॉल्यूशंस मिलेंगी, और it can be less than so this is the positive solutions. And negative solutions क्या होंगे? हो सकते हैं, negative ones can be this. So जो positive solutions and negative solutions में there will be some sort of energy gap. आई कि नहीं? So energy can be greater than this, or energy can be. So if there is energy gap in the classical sense, so there can be always some photons which will, जिस तरह shell में होगा ना, जैसे ऊपर shell होगा, अगर the electron from the upper shell will release photon, it can go down, है ना? So it's always possibility जो electron की with more energy होगी, that will be excited states, and it will be, so it will always go this thing ऊपर वाला ये space नीचे में जाएगा, and this will make, this thing will make us कि matter can be फिर intrinsically unstable हो जाएगा ना, जैसे all electrons will come one place, protons और जो भी है, जो भी charged particles, they will have by this logic, by this logic. So इसको circumvent करने में how did इसको circumvent करने में how did people like
So how did Dirac ने एक explanation दी which was similar to that of the explanation of Dirac was similar to that of Pauli explosion principle. But he did not say. So I'm coming to what how Dirac arrived at things. So Pauli's exclusion principle क्या कह रहा है? No two electrons are same. So why? From what? For example, अगर n है हमारे पास, n is the total number of electrons. So n is ऐसे पढ़ते आ रहे हैं. So n can be 1, 2 जैसे आप कर रहे हैं. Magnetic 2, 3, 4 है ना? So you can have 2, 8, 18, so on and so forth. अब यह है कि Pauli's exclusion principle में उसने reason नहीं दिया कि why they should 2 electrons should not occupy different spins or states. तो उसने क्या कहा कि he used the word peculiar duplicity of electron state, non-describable, peculiar duplicity of. So you cannot replicate or duplicate electron state एक जगह में, ठीक है? But उस वक्त spin discover. तो डिराक ने वही कहा कि he invoked the notion of spin. Why to जो spin एक ऐसी property है, अगर कोई spin ऐसे करेगा तो दूसरा वाला उसका opposite spin होगा. It will be a sort of repulsion. जैसे like एक magnet movement, एक electron का एक sort of magnet है ना, एक ऐसे. That's what we would call upspin and downspin. हाँ, that we call upspin. So his explanation for this thing that some charge will have this thing and some will have less thing. Why matter is stable? He got it from the property of spin. Later, which you might have studied in your course in advanced quantum mechanics, हम इसकी explanation क्या देते हैं? Symmetric wave function and antisymmetric wave function. So symmetric wave function क्या है? Psi1 can go to Psi1, shabash. So it will correspond to antisymmetric wave function. Psi1 is not equivalent to minus Psi1, है ना? So अगर एक Psi1 is equal to minus, अगर इसको flip करेंगे, the anti property will get flipped. कुछ particles की ऐसी उसको spin है. If we just symmetrize them, they can symmetrize only in the opposite that sign factor. And some particles हैं, you can symmetrize them. ठीक है? So उसी basis पे the classification was these are called as fermions, and these are known as bosons. So this is the one way of. So इससे फिर we can explain a lot of things like interior of the stars में क्या हो रहा है, metals की properties, matter की properties, है ना? Why जो neutrons है ना, why जो stars है ना, why they could not coalesce into single point. So हम कहते हैं कि जो electron spin की वजह से electron degeneration pressure होता है, there is sort of repulsion there. And it is somewhat embedded in the particular property of spin. अब यहाँ पर ये है कि Dirac further was not satisfied. उसने आप कहा कि अगर ये spin है, there are some जो ये balance हो रहा है ऐसे, मगर अब उसने कहा कि जो ये in a sea of electrons, वहाँ उस वक्त का जो jargon है ना, यही आज की डेट में बहुत सारी किताबों में लिखा होता है, sea of electrons, electron sea कहते हैं ऐसे, ठीक है?
So there are some electrons which are less charged and more charged. ठीक है, उसको उसने कहा था whole theory. Initially it was whole theory. Got my point? Which is electron deficient and which is electron sufficient. Some regions in space they are electron sufficient and some regions are deficient. And वहाँ से जो polarization होती है उसी से उसको उसने कहा जहाँ ज़्यादा होंगे उसको उसने whole कहा. ठीक है? It is on the basis of charge property. हाँ, whole कहा उसने. मगर whole people were not comfortable with the whole. फिर डिराक ने पेपर लिखा कि theory of electrons and protons. इसने कहा वहाँ holes नहीं होंगे, वहाँ protons ही होंगे. क्या होंगे? Electrons and theory of spin for electrons and initially it was holes, but people have had फिर holes कहाँ पर है? Cannot have holes. Then he talked protons. But proton का mass था ना heavy as compared to electron. So there was a and जो उसकी theory में we calculate from the second order perturbation first two terms. जो उसका mass वहाँ से आ रहा था ना, that was not coming to that of what the mass of proton was. Mass of proton is 1834 times more than that of electron. It was coming 203 times कुछ. So था ना ये फिर कुछ discrepancy. People were not satisfied with this explanation. Then, if you remember, 1932 में एंडरसन ने डिस्कवर किया था ये. एंडरसन एंड ब्लैकेट. तो उन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड है कॉस्मिक रेज. They discovered that incoming cosmic rays आ रही हैं. वहाँ a particle was, उसका नाम उन्होंने लिखा पॉजिट्रॉन. उसका चार्ज एग्जैक्टली दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन था, बट उसका मास प्रोटॉन की तरह नहीं था. The mass came out to be closer to what Dirac theory had predicted. ठीक है? So this proved that फिर डिराक की ये थ्योरी है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल या कोई भी नेचर में जो है इलेक्ट्रॉन का अपना एंटी पार्टिकल होगा. पॉजिट्रॉन प्रोटॉन का होगा एंटी प्रोटॉन. सो दैट केम द थ्योरी, डिराक्स थ्योरी जो हम पढ़ते आते हैं. ठीक है? अब उसमें भी द थिंग इज कि इट हैपेंड फॉर स्पिन हाफ पार्टिकल्स, बट स्पिन वन पार्टिकल में फॉर एग्जांपल देयर आर फॉर एग्जांपल मीजॉन्स आर देयर एंड it was the explanation was not there in that sense, but still जो ये डिराक की थ्योरी है it survived in that, कोई भी सर्वाइव कर रही थी that it's the best possible explanation कि every particle की होगी एक एंटी पार्टिकल होगा. अब क्वेश्चन है कि फोटॉन का भी एंटी पार्टिकल है. फोटॉन का एंटी पार्टिकल it's photon itself. ठीक है? So there are some puzzles which are there. मगर अगर अस पार्टिकल्स एंटी पार्टिकल प्रत जाए मौजूद तेल आसा सोरी की एनर्जी मन स्टेट मज अगर लबनी. हाँ, अब इसमें ये है क्वेश्चन जो वर्क इन हाई एनर्जी फिजिस्ट है ना, हाई एनर्जी अगर मुबशिर से एंटी मुबशिर तो लबनी के सोरी एनर्जी में ट्रांसफर. एक बहुत बड़ा है people who study cosmology. ताकि मैं चीज़ सुना, we say that when the universe started, हम कहते हैं कि the number of protons, matter was more than antimatter. क्या सुना? Matter was more than antimatter. या आप सुना baryogenesis. When the early universe started, we assumed it. उससे हमको you can explain the predominance of matter. अगर matter and antimatter universe when the universe began to start, matter और antimatter same proportion में होते, universe would have only been radiation. Since we are seeing predominance of matter, तो we propose इसको कहते हैं baryogenesis. Baryon conservation. ऐसा क्यों कि लाभ लेती है वहाँ से? नहीं वो matter नहीं antimatter. नहीं वो हम matter इस वजह से नहीं मिलता है, but in small quantity. उसकी explanation ये है. इसलिए पॉजिट्रॉन मिला ना हमको cosmic ray में, ये कैसे मिला? ठीक है? So the matter की predominance है और antimatter. Because we say that baryogenesis जो होती है, जो baryon formation होती है, तो उसमें हम कहते हैं baryon conservation law violates. This violation of हम पढ़ते हैं ऐसे. When you go to any particle physics book,
It is violation of Barium conservation law, which explains predominance of matter over antimatter, which explains the जो हमारे पास visible matter है. मगर इसके बरक्स एक और theory भी है, उसमें कहते हैं कि matter and antimatter same amount में थे, मगर एक यूनिवर्स बन गया यहाँ, दूसरा एंटी यूनिवर्स बन गया. यहाँ ब्लैक होल बनेंगे, वहाँ व्हाइट होल बनेगा, ऐसा कुछ. This is speculative theory. Got my point? Not found, yes. So अब क्वेश्चन है कि how can these universe and anti universe जो है ना, how they will communicate. This is a research field. People are working on these questions. ठीक है? How the universe started in cosmology, early universe, matter. So this is how particle physics also interrelated with cosmology. Particle physics. उसको कहते हैं astroparticle physics. Early universe है physics of the early universe. If I हो something, इसमें है ना बाइबल में God said let there light be. So initially Genesis में there was only light, है ना? चलो light in the sense that matter, अगर matter antimatter only होती, only light होती, light नहीं है, तो that's a different discussion. टाइम असमस दिखा है ना फर्क अगर हाँ उसमें टाइम रुक जाता. नहीं इसमें भी क्वेश्चन है ना, इसको कहते हैं टाइम रिवर्सल स्पीड. नहीं इसका चार्ज है ना, चार्ज कंजुगेशन. These are all properties we assume. इसका space invariance. So these are some properties we assume. जैसे forward direction of time will be same as backward direction of time. जरूरी नहीं है. You assume this property. अगर और एलिप्स Space invariance को भी हम assume करते हैं. टोटल एनर्जी ना यूनिवर्स से जीरो इन दैट सेंस. वो भी हम नहीं एक्चुअली हम कंजर्वेशन ऑफ लॉ जो या मास है एनर्जी नहीं टाइम कंजुगेट. इट्स लाइक दैट. आपके पास कोई चेक बुक है, आपके पास बैंक में 1000 रुपये है ना, यू कैन ऑलवेज सी मैंने कितना निकाला कितना काम किया, बट पहले आपको तखमीना होना चाहिए ना कितना था मेरे पास. मगर हमको पता ही नहीं ना टोटल मास ऑफ यूनिवर्स कितना है, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स टोटल कितनी है. देन वी कैन से whether law of conservation of energy or mass is true or not. We can prove law of conservation of mass in some limited sense. लिमिटेड सेंस में ये हो गया. फॉर एग्जांपल अगर हम कोई शमा है या मैस्टिक, आप कहेंगे धुआं कितना है, तीली की जो वेट एक साइड लेंगे इट्स इक्वल टू दैट, बट इट्स लिमिटेड. अगर चूंकि वहां एनर्जी जीरो वो तथा पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज न्यूट्रलाइज होगा. पॉजिटिव एनर्जी वैल्यूज के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि ई टी कंजुगेट ग्रेटर और एच कट. नहीं दीस आर ऑल और नेगेटिव वैल्यू वैसे टाइम बैकवर्ड डायरेक्शन में पाकुन एल जीरो आज टोटल को ओवरऑल इन नेगेटिव बैलेंस में टाइम शुड स्टॉप. नहीं क्वेश्चन इज कि हाउ यू टेक टाइम एज अ प्रॉपर्टी इन अ गिवन थ्योरी स्टार्टिंग में. दीस आर ऑल प्रॉपर्टीज यू अज्यूम. इफ यू अज्यूम देम दैट वे and you take for example relativistic quantum mechanics में special relativity लेते हैं, and special relativity हम time को कैसे लेते हैं, ठीक है. टाइम जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में सेम होता है कि नहीं होता है. ये आर्गुमेंट है कोई एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे. हाँ क्योंकि जितना आगे जाने की प्रोबेबिलिटी होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में से ओवरऑल दिस टाइम रुकून, मगर ये होता नहीं. प्रोबेबिलिटी दुश्मन चीज़ें गस्न मगर अच्छा फॉरवर्ड डायरेक्शन में सम बॉडीज कंट्रोल. Why should you regress? For example, टाइम को आप कहीं एट द स्टार्ट में यूनिवर्स क्यों स्टॉप करोगे, जिसको हम कहते हैं अनकॉज्ड कॉज्ड. इट्स अ बिग डिबेट. कभी आप मुझे बताना, वी कैन डिस्कस द आइडिया ऑफ टाइम और किसी क्लास में आइडिया ऑफ टाइम. इसका फिजिक्स में, थियोलॉजी में, फिलॉसफी में देयर आर फिजिक्स, थियोलॉजी एंड फिलॉसफी, देयर आर intersections. So I think it has simple answer. If there is a zero time parameter, then we will have infinite energy. In what? Zero energy means zero time. Stop. No, it's beginning. How you start? How you start from the origin? Time. So here we take जो particle physics में हम simply लेते हैं ना,
जैसे टाइम रिवर्सल सिमेट्री, वूज एक्सपेरिमेंट नहीं आपने पढ़ा है, तो कुछ ना किसान व्हाट हैपेंस वूज एक्सपेरिमेंट में दैट स्पेस व्हेन यू टेक स्पेस इज नॉट ट्रांसलेशन इनवेरिएंट, वहाँ एक सिमेट्री ब्रेक होती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि विच एवर सिमेट्री दैट इज, सो वही तो हम क्वांटम फील्ड थ्योरी में पढ़ेंगे ना, सिमेट्री ब्रेकिंग इज अ बिग थिंग इन क्वांटम फील्ड। जो हम पढ़ रहे हैं क्वांटम फील्ड थ्योरी में अभी, हम पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स प्लस लोरेंट्ज सिमेट्री। Lorentz symmetry means special theory of relativity holds. No particle will travel greater than speed of light. But you can break Lorentz symmetry. So there can be some quantum field theories, उनको हम कहते हैं non-local QFTs. अभी हम पढ़ते हैं सिर्फ local QFTs to begin with. But you can extend local QFTs to non-local QFTs. And you can take local QFTs as part of some subset of non-local. You can in principle start that any signal can instantaneously reach between 2 points in no amount of time. यहाँ से यहाँ तक लगता है ना स्पीड लाइट को चलने में लगता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कितना लगता है, लाइट मूव्स एट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, कुछ टाइम लगेगा, सो दैट्स अ लोकल इफेक्ट। बट अगर नॉन लोकल होगा तो इंस्टेंटेनियसली दीज टू पार्टिकल्स विल नो ईच अदर, ठीक है। सो यू कैन कंस्ट्रक्ट दोज क्वांटम फील्ड थ्योरीज आल्सो। सो जो हम अभी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं दिस इज लोरेंज इनवेरिएंट क्वांटम फील्ड थ्योरीज, ठीक है, और रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। So if I'll just summarize it, what we have done today in the perspective of Dirac theory is that so अगर हमारे पास QFT है, so इसके दो व्यू पॉइंट हैं, एक जॉर्डन एंड अदर जो मैंने फिजिस्ट किया था, और एक डिराक का व्यू है। इसका पार्टिकल व्यू है, इसका फील्ड थ्योरेटिकल व्यू पॉइंट है, एंड जो क्वांटम फील्ड थ्योरी है इट्स मोस्टली 1945 जो भी हम पढ़ेंगे। और इसके बाद भी इन 60s देयर वाज एस मैट्रिक्स थ्योरी एंड दैट्स कंटिन्यूइंग अप टू दिस टाइम, एंड 70s में आया वाइनबर्ग सलाम थ्योरी, ये भी हम 50 में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोवीक थ्योरी। देन 74 में ये टी हुफ्ट ने कहा, ही शोड दैट गेज field theory is renormalizable. Renormalizable परसों मैंने कहा था, which doesn't have divergences. He showed this in that sense. So and one, I'll just summarize it. One thing is there are जो अभी मैंने कहा था symmetrization and anti-symmetrization. We write it like this in terms of जो ब्रैकेट फॉर्मुलिज्म है, you can write it like this. और दूसरी कंडीशन है, this one will recover Fermi-Dirac statistics, this bracket, and another will recover the other statistics. अब इसमें सिर्फ फर्क ये है, when you have a commutator here, जो हमारे पास यहाँ पर ये है, so we'll do it in detail, but to let you का थोड़ा फील देने के लिए, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा for anti-symmetric particles. अब ये Dirac's theory not only account for the spin of electron, ये fine structure of hydrogen atom जो पहली बार था ना, it was explained from the Dirac theory. And so Dirac theory की some of the things which are more there in the Dirac theory, you can say Dirac theory की जो है ना ये predictions, whole theory पहले, and prediction of antimatter, है ना। आज की डेट में if you have there are some labs, we are also creating in lab anti-proton recently 2-3 साल पहले, अगर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा हो, है ना। But the theory is here. इस तरह आपने पढ़ा होगा
इन क्वांटम मैकेनिक्स क्या पढ़ा है आपने? एक तो पढ़ा है श्रोडिंगर पिक्चर, इंटरेक्शन पिक्चर एंड हाइजेनबर्ग पिक्चर पढ़ा है ना, तीन. तो इंटरेक्शन पिक्चर वाज बेसिकली गिवन बाय डिराक. इसी तरह समथिंग कॉल्ड वैक्यूम पोलराइजेशन, सुना है? सो वैक्यूम इज नॉट फ्री. इससे पहले डिराक हेल्महोल्ट्ज क्या कहते थे? वैक्यूम इज फ्री, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता. But vacuum itself can be polarized because already there may be holes and electrons in space, free space, and that will polarize vacuum also. ठीक है? अब वैक्यूम पोलराइजेशन को हटाने के लिए डिराक ने आइडिया दिया था चार्ज रिनॉर्मलाइजेशन का. एंड चौथा इसने दिया था रिलेटिविस्टिक formulation of Bohr's electron, including its classical version. So maybe you can see these 3, 4, 5. अब charge renormalization जो मैंने कहा था, how to do away with, जिसका हम screening करते हैं ना, in any given approximation we only take first two terms, sometimes screen the other smaller effects. जैसे दो protons attract या repel करेंगे, vacuum polarization होगा, we neglect it. Or we sometimes screen it out. इसका एक अपना प्रोसीजर है, ठीक है? That's it. Stop.